Hello everyone and welcome to Career Launcher. In today's class, we are going to discuss a very important topic which is very much trending and it is in the news, and that is HMPV virus. Um, for the past few days, if you are reading newspaper, whether you are reading the Hindu newspaper or any other newspaper, I'm sure you must have come across actually this about HMPV virus in the newspapers. Even in editorials and on first page, you must have seen. So we are going to discuss about HMPV virus, its history, its which family it belongs to, and I'll be discussing something about virus also, because for the past 4 or 5 years we had seen COVID-19 and many other virus do comes in the news. So that is why we will be discussing about this. Okay, and then after that, in the second half, I will discuss some other medical related topics like COVID-19 related, some vaccines, and things related with vaccines, so which were in the news in the last 1 year. तो थोड़ा बहुत वो भी जान लेंगे, because बहुत सारी चीज वैक्सीन से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड ये न्यूज में था पिछले एक आध सालों में. So we will discuss that. Okay. Yes. Good evening, guys. Am I audible, visible? मेरी आवाज पहुंच रही है? Is everything fine? If I'm audible, visible, please write yes in the comments so that we can start our session. Okay. So let us begin the class with the question answer. So I'll give you a question and please try to answer it. And with the help of the question answer also, we will discuss a lot of things. So the question is, which of the following is correct about HMPV? HMPV का full form ये है, Human Metapneumovirus. So क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी बात सही है. डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? अच्छा, डीएनए आरएनए तो जानते होगे ना. डीएनए मींस डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड. Yes, single standard RNA virus. Yes, Priyanshi Goyal and Safi Nomani, you both are right. B is the right answer to this question. देखो मैं क्यों बता रहा हूं, देखो होता क्या है, जो भी चीज न्यूज में होती है ना, उसका विकिपीडिया जरूर पढ़ना चाहिए. एटलीस्ट शुरू के 1-2-3 पैसेज, 2-3 पैसेज. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इफ यू सी द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जाम, स्पेशली क्लैट इलेट में, तो जो चीज न्यूज में रहती है उसका विकिपीडिया से क्वेश्चन देते हैं वो. ठीक है. So since it is in the news, so they can ask. So it is negative sense single stranded RNA virus. Okay. कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हो सकता है ये भी कहीं पूछ ले. So you should know it. The family is Pneumoviridae. Okay, this you should be knowing about. So they belong to this family Pneumoviridae. ठीक है. And closely related with AMPV subset group. इतना नहीं पूछेंगे, ये फैमिली पूछेंगे और कौन से वायरस है. So single stranded RNA virus. So that is what you should know. अच्छा, एक दो चीज बताते हैं. जनरली स्पीकिंग डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है. सिंगल स्टैंड मतलब देख रहे हो एक स्ट्रैंड का है, ये डबल 2 स्ट्रैंड का ऐसे क्रॉस. तो दिस इज कॉल्ड एज डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है एंड आरएनए जो होता है दैट इज एक्चुअली सिंगल स्टैंडर्ड. आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड. ओके. तो बहुत सारे वायरस डीएनए वायरस होते हैं, बहुत सारे आरएनए वायरस होते हैं. जैसे आरएनए वायरस का आपने नाम सुना होगा, जैसे अभी तो एक HMPV वी हैव डिस्कस्ड, देन सम अदर आरएनए वायरस जैसे कोरोना वायरस जो था, कोविड-19 जिसको आप कह रहे थे, SARS-CoV-2, दैट वाज आल्सो एक्चुअली आरएनए वायरस का एग्जांपल है. ठीक है. फिर जैसे वेस्ट नाइल वायरस हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ, है ना. कुछ फेमस वैक्सीन जैसे एक आपने नाम सुना होगा HIV हुआ. सो दीज ऑल आर एक्चुअली RNA वायरस. सो एग्जांपल ऑफ RNA वायरस. SARS MERS, ठीक है. SARS मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. देन मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COVID-19, डेंगू, हेपेटाइटिस C, E, वेस्ट नाइल फीवर, इबोला, रेबीज, पोलियो, मम्प्स, मीजल्स, ये सारे RNA वायरस होते हैं. ठीक है. ये HIV एंड ऑल. कुछ डीएनए वायरस भी अगर आप चाहो तो जान सकते हो, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, हेपेटाइटिस B. ठीक है.
and just have an idea. बहुत detail नहीं जाना. I'm not going very much in detail, but a basic idea you should have. Now, the next question is HMPV was first found in which country? Malaysia, Netherlands, Belgium, Russia. ये काफी news में है. That is why I'm asking. And can you please tell me the year? This is very much in the news. In fact, this has been when Mr. Health Minister was giving talking to the media, or he talked about this also. Yes, Priyanshi Goyal, you are right. Pro Gaming, Safi, Priyanshi Goyal, you are right. 2001. Yes. So the right answer is Netherlands. In 2001, HMPV virus was found. So B is the right answer to this question. इसी का पुराना नाम है, old name is Holland. So है ना, is a negative sense single stranded RNA virus isolated for the first time in 2001 in Netherlands. ठीक है, so इतना आपको पता होना चाहिए. Okay, let's move on to the next one. है ना, चलो देख लेते हैं. So here is India, this is Europe. ठीक है, and ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया यही है नेदरलैंड. ठीक है, so this is actually Netherlands. The capital of Netherlands is Amsterdam. Okay, yes. Let's move on to the next one. HMPV affects which of the following organs? Heart, lungs, liver, large intestine. मतलब डायरेक्टली किसको हो सकता है, इनडायरेक्टली किसी और को भी कर दे, बिकॉज समटाइम्स को एक से मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ता है, बट द मेन टारगेट इज व्हाट, which organ? Yes, simple. I think it's not very difficult. Yes, Priyanshi Goyal and Safi Nomani, Pro Gaming, you all are right. B is the right answer. In fact, COVID-19 भी है ना. Yes, respiratory disease है. Yes, आपने सही बताया. सांस लेने की तकलीफ से होता है ना, मतलब all are actually related with this respiratory tract illness. देखो यहाँ लिखा ना है, it's actually acute respiratory tract illness, है ना. तो यानी सांस लेने की तकलीफ. तो even the same similar thing was actually in case of COVID-19 also, pneumonia and other things. ये सब में सब उसी से related है, lungs. ऐसे अगर इनडायरेक्टली कहोगे तो कोविड-19 से जो लंग्स डैमेज हो रहा था, तो समटाइम्स इनडायरेक्टली हार्ट भी इंपैक्ट कर रहा था, बिकॉज यू माइट हैव सीन सम हार्ट अटैक्स हैपनिंग ड्यूरिंग कोविड एंड ऑल. तो इनडायरेक्टली तो हो सकता है, बट डायरेक्टली इट इज इंपैक्टिंग द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो द आंसर इज बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. So HMPV virus was first discovered in 2001 in Netherlands by Bernadette G. van den Hogen. So just have an idea, इससे ज्यादा नहीं जाना. ओके, है ना. इट इज 3 से 6 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है. मतलब अगर आपकी बॉडी, गॉड फॉरबिड इफ समवन इज इन्फेक्टेड, मे बी इन द इनिशियल 3 to 5-6 days उतना पता नहीं चले, है ना. आफ्टर दैट द इम्पैक्ट विल बी शोन एंड ऑल. ठीक है, तो ये सब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना. आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. Okay, so we will discuss something. The government of India's initiative, government of India ने या health ministry ने क्या है, WHO ने क्या कहा है. Then we will discuss something about vaccines also, and something related with virus. And if in the last 1 year things related with virus is in the news, तो वो भी हम लोग discuss करेंगे, because that's a part of current affairs we will discuss. Fine. तो देखो, अगर आप the Hindu newspaper पढ़ रहे होगे, so if you are reading the Hindu newspaper, I am sure you must have seen these types of article. No report of any unusual outbreak pattern for HMPV, says WHO. Unusual है तो बहुत ज्यादा क्यों होता है ना, कि सडन बहुत स्पाइक आ गया या ऐसा कुछ है कि एकदम कंट्रोल से बाहर है. We have seen some increase in the numbers, but that does not mean that it is unusual outbreak, says World Health Organization. Okay. So WHO is in contact with Chinese health officials. Why Chinese? Because China में थोड़ा ज्यादा देखा गया अभी recent months में, recent days में, and has not received any reports of unusual outbreak, noted the WHO. ठीक है. It added that Chinese authorities report that the healthcare system is not overwhelmed and that there have been no emergency declaration. तो WHO ने कहा कि चाइनीज ऑफिशियल से पता किया गया है कि बहुत ओवरवेल्म यानी अनकंट्रोल्ड नहीं है सिचुएशन, और इमरजेंसी डिक्लेरेशन नहीं किया गया. और ये वही रेस्पिरेटरी इलनेस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो ये बता ये रहा है कि हालांकि जो डाटा पब्लिश किया गया चाइना में 29 दिसंबर 2024 को, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैव इंक्रीज ड्यूरिंग रिसेंट वीक्स. ठीक है, तो ये बात सही है कि जो प्रॉब्लम है वो रिसेंट वीक्स में इंक्रीज हुई है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. And that is what is being mentioned here, है ना. So detection of seasonal influenza, rhinovirus and HMPV in northern province, especially in the northern province of China. ठीक है, हाँ, तो northern China में ज्यादा है, तो like इंडिया से थोड़ा दूर ही है, but that is what you should know, है ना. इसमें कुछ
It is a common respiratory virus found to circulate in many countries in winter through spring, although not all countries. हाँ, मोस्टली जो है ना स्प्रिंग में, स्प्रिंग मतलब वही जो जब फरवरी मार्च को कहते हैं ना, एंड विंटर मतलब ठंड, तो जनरली इन्फ्लुएंजा वगैरह इस टाइप का विंटर में नहीं, ठंड में और स्प्रिंग में ज्यादा होता है. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. करेक्ट. नाउ तो ये मैं WHO के आई वाज सर्चिंग ऑन द WHO's वेबसाइट अबाउट इट, तो मेरे को मिला, सो आई गॉट इट. तो अगर आप देखो ये 2018 का डेटा है, स्पाइक्स दिखा रहे हैं. ठीक है. किसके स्पाइक्स? वही ऑफ दिस. तो HMPV जैसा कि आपको बोला कि ये नया वायरस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि इट इज अ न्यू वन. दिस हैज वी हैव सीन इन द पास्ट. तो ये 2024 का देख लो, लास्ट में दिसंबर के 2024 में वी हैड सीन ऐसे तरह का स्पाइक्स. ठीक है. एंड दैट इज व्हाट. Or let's move on to the next one. This was very much in the news. So, in fact, he was actually talking to the media. I mean, he issued a video, also a statement and all, and he was saying that we should not get much panicked, but it is not something new. HMPV. Who among the following is the Health Minister of India? या Minister of Health and Family Welfare. पता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में. उस टाइम पर हेल्थ मिनिस्टर वाज समवन एल्स. एक्चुअली द राइट आंसर इज ए, मिस्टर JP Nadda. Yes, he's also the president of BJP. Yes, Safina Mani. अच्छा, he is having one more ministry. वो कौन सा मिनिस्ट्री उनके पास? तो 2021 में क्लैट ने क्वेश्चन पूछा था. They asked about this. That who is the Minister of Health and Family Welfare. और उसी टाइम पर चेंज हुए थे. उस टाइम पर डॉक्टर हर्षवर्धन से चेंज होकर के मिस्टर मनसुख मांडविया बने थे हेल्थ मिनिस्टर उस टाइम पर. So currently that is not the case. Currently Mr. JP Nadda is the health minister. So be aware, these types of questions are asked. खास के अब इसलिए पूछेंगे इसलिए कि HMPV virus is in the news. So of course they can ask about it. That who is the health minister of India? Farmer welfare, not farmer welfare. Actually, Minister of Agriculture and Farmer Welfare is Mr. Shivraj Singh Chauhan. Shivraj Singh Chauhan is actually the former Chief Minister of Madhya Pradesh, ex-CM of Madhya Pradesh. ठीक है. So this is what you should know. Mr. JP Nadda is having one more ministry. कोई बता सकता है? One is Health Ministry. He is Minister of Health and Family Welfare. There is another ministry also he is having. Third thing is he is a BJP president also. But he is having two ministries as far as I could remember. So who is the second? What is the second ministry he is having? Agriculture ministry was recently in the news. ये भी याद रखिएगा, Minister of Agriculture and Farmer Welfare, because there is a farmer protest happening, है ना? I hope you are aware if you are reading newspaper. Mr. Dhalewal, who is actually the one of the farmer leader, he is on protest fast and do that or something like that. I'm sure you must have seen it when we had discussed few days back the Hindu analysis. We discussed these things. And MS Swaminathan committee, MSP, minimum support price, etc. Okay. So Mr. JP Nadda is having one more ministry, and that is Ministry of Chemicals and Fertilizers. ठीक है. So आप देख सकते हो, easily राज्यसभा member है ना. So Union Minister of Chemicals and Fertilizer. ठीक है. 10 June. Then he's also the Health Minister of India. ठीक है. So this you should know, and he is the president of BJP since 28 January 2020. ये सब पता होना चाहिए. Okay, let's move on. And so recently, actually, he came up with a video and all where he was talking about that it is not a new virus and no reason to worry. So we should not get panicked and all. है ना? So we have cases, जैसे उन्होंने बताया था, we have seen some cases and all, है ना? And it is not a new virus. Urging the people not to panic. हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे ये सब ना ट्रेंड चल रहा था, लॉकडाउन एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज व्हाई द हेल्थ मिनिस्टर हैज कैटेगोरिकली सेड कि ऐसा ट्रेंडिंग वगैरह मत चलाइए. लाइक इट इज नॉट सच अ सीरियस सिचुएशन, है ना. इन अ वीडियो मैसेज emphasized that the government is closely monitoring the situation and taking necessary steps. And he has clarified that it is not a new virus we have seen in 2001, and has been circulating in the world since many years. तो इतना भी परेशान नहीं होने का है. It is not that it is going to impact very massively अभी के हिसाब से. ठीक है. So even Union Health Secretary has also reviews present situation of respiratory illness. Now what is the difference between Health Minister and Health Secretary? So Health Secretary will be the senior most officer in the ministry.
ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर जो है पॉलिटिशियन होते हैं, हु इज द पॉलिटिशियन हु हेड्स द मिनिस्ट्री। उसमें हर मिनिस्ट्री में एक ऑफिस सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज सेक्रेटरी, है ना, मतलब ऐसे एक्चुअली जाता है। आई होप यू आर अवेयर कि सबसे ऊपर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होते हैं, उनके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। सो जॉइंट सेक्रेटरीज आई थिंक 1 2 3 होते हैं, फिर उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, लाइक दैट। ठीक है। सो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इन दैट मिनिस्ट्री इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी। ठीक है। So status of public health measures for the management, no surge in the country of respiratory illness. And so that is what Union Health Secretary Miss Punya Salil Srivastava said. Salila Srivastava. Okay. So that is what she has said. And the data during the meeting was reiterated that the data from IDSP, है ना, Integrated Disease Surveillance Program, जो है, it does not indicate any unusual rise in the cases and all. इतना ज़्यादा परेशान होने का नहीं है. So that is what is being discussed. Okay. Then here WHO has come up with the explanation and all. So उसको explain किया गया है ना. It is typically caused by seasonal epidemic of respiratory pathogens such as seasonal influenza, respiratory syncytial virus and all. इसमें बहुत ज़्यादा detail नहीं जाने का. It is currently in some countries in temperate northern hemisphere we are seeing this type. ILI मतलब वही influenza like illness. ठीक है. And ARI means acute respiratory infection, यानी सांस लेने की तकलीफ and all. सो कहीं कहीं पे देखा गया सीजनल इन्फ्लुएंजा एक्टिविटीज एलिवेटेड एंड ऑल, इसमें बहुत कुछ खास डिस्कस करने का नहीं है। ठीक है। टाइम हॉस्पिटलाइज है ना, तो कुछ केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है, जैसे ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया, वही जब थोड़ा सा बढ़ जा रहा है तो इट इज एक्चुअली डैमेज इन्फेक्टिंग द लंग्स एंड ऑल। तो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना। ओके। WHO is in contact with Chinese official and has not received any report of unusual outbreak. Let's move on to the next. I have told you that since we are talking about virus and all, HMPV virus, we will discuss about vaccines, we will discuss about virus, we will discuss some more things related with vaccine which has been in the news in the last 1 year. तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चूंकि HMPV वायरस की बात कर रहे हैं, so now here is a question for you. Which of the following is correct about virus? तो एक वायरस कंप्यूटर वाला भी वायरस होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट वायरस इन बायोलॉजी सेंस. व्हाट इज द राइट आंसर? आई एम एक्सपेक्टिंग यू वांट टू आंसर. देखो, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, मीन वायरस इट इज समवेयर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना. वाई? बिकॉज वायरस जो होता है ना, खुद मल्टीप्लाई नहीं होता है, बट इट नीड्स अ होस्ट. अगर उसको होस्ट मिल जाएगा तो कल्चर करेगा और इट कैन मल्टीप्लाई. मतलब आप ऐसा समझ लो कि वायरस नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही उसको होस्ट मिल जाएगा वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा. तो इसीलिए लिखा है कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम. नहीं, सिंथेटिक मतलब होता आर्टिफिशियल मीडियम नहीं. It actually needs a living being. ठीक है. So virus is something like that कि अगर ये वायरस है अकेला, खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको कोई लिविंग बीइंग मिल गया तब उसकी बॉडी में घुस करके स्प्रेड करना शुरू कर देगा. ठीक है. So that is why there's a dispute. So it is generally considered as between living and non-living. ठीक है. इसलिए कि ऐसे stand alone, it acts as a non-living, but once it actually comes into the body of any living being, let's say plant, animal, human, plant में भी जाकर प्लांट को डैमेज कर देता है ना, या एनिमल जानवर किसी में गया, so it starts spreading. ठीक है. वो खुद से स्प्रेड करना शुरू कर देता है अगर वो किसी उसको मतलब होस्ट मिल जाए, उसको होस्ट कहते हैं ना. So that is what you should be doing. और this is ये बेसिक प्रॉपर्टी है वायरस की, अगर जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्कूल में, तो you should be knowing it. B is the right answer to this question. Okay. Now let's move on to the next one. PHEIC, Public Health Emergency of International Concern. This is declared by UN General Assembly, UN Security Council, UN Secretariat, World Health Organization. What is the right answer?
public health emergency of international concern. What is the right answer? I think it's very easy. Like, you can answer with the common sense as well, and we have discussed so many times, if I'm not wrong. This is actually declared by anyone? Waiting for the response. The right answer is D. World Health Organization declares public health emergency of international concern. PHEIC. So D is the right answer. Now, what is PHEIC? I'll explain because this is important. Okay. Okay. So basically, it is a health emergency at international level, which is declared by WHO. Okay. So that it is of extraordinary public risk. If any disease is declared PHEIC, public health emergency of international concern, it means it is a serious issue and we have to handle it at the international level. Okay. So and how many PHEIC, public health emergency of international concern, has been declared so far? For how many disease? 5, 8, 6, 9. कितनी डिजीज को PHEIC अभी तक डिक्लेयर किया गया है? Anyone? So the right answer actually is B. 8 disease को. ठीक है. So total 8 disease have been declared as PHEIC. That is public health emergency of international concern. Now let us move on to the next question. Which of the following was the last disease to be declared as PHEIC? So total 8 diseases have been declared. Last one, यानी अभी सबसे recent one कौन सा है? The most recent disease which has been declared as public health emergency of international concern. HMPV, COVID-19, Mpox, Ebola. What is the right answer? So the right answer is option C, Mpox. Then monkeypox जिसको कहते हैं. So C is the right answer to this question. Yes, Daffy, normally you are right. Is India is that risk? नहीं, बहुत ज़्यादा risk पे नहीं है. HMPV, we should not worry much about it. है ना? Yes, yes, Priyanshi, मैं देख नहीं पा रहा था, पता नहीं, there were some tech issues. I've just disconnected and connected again. Answer there थे, हाँ, WHO, very good. I was not able to see your response. ठीक है, अब आपको visible है comments. पता नहीं उस टाइम पे visible नहीं था. There were some issues. खैर, let's move on. तो जो 8 PHEIC है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, वो ये है. ठीक है, एक H1N1 ये सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था. इसको स्वाइन फ्लू कहते हैं. उसके बाद 2014 में पोलियो डिक्लेयर किया था. 2013-16 में इबोला, ये भी बहुत खतरनाक डिजीज है. फिर जीका वायरस 2015-16 में. फिर 2018-20 में कीवो इबोला. फिर ये बहुत फेमस हुआ था, कोविड-19 को भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया था. उसके बाद एमपॉक्स को 2 बार, एक 2022-23 में, एक 2024 में. मतलब अभी तक टिल नाउ HMPV हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. WHO ने अभी तक इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न नहीं डिक्लेयर किया. अगर इसको डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारे और रेगुलेशंस बढ़ जाते हैं ना, इन इंटरनेशनल मूवमेंट्स में एंड ऑल. ठीक है, और जैसे अगर फ्लाइट से जाना है, किसी को आना जाना करना है, तो बहुत सारे रेगुलेशंस हो जाएंगे एंड ऑल. और मतलब एडवाइजरी WHO जारी करेगी, है ना. So that is what you should be knowing. Okay, let's move on to the next one. Since we are talking about WHO, World Health Organization, etc., this you should be knowing. When is the World Health Day observed? 3rd June, 7th April, 21st July, 9th August. What is the right answer? And why do we celebrate? Yes, Del Singh Donut is saying B. Safi Nomani is saying B. Why? But why on 7th April? What is so special?
देखो डेज एंड थीम्स से क्वेश्चन आया था. इफ यू सी CLAT 2021 they had asked questions on days and themes. Foundation of WHO, very good. Which year? Yes, Dal Singh Donut Safi, 7th April 1948. Great. Mariam, you are right. 7th April 1948 WHO was formed, World Health Organization. Okay, so 7th April 1948. And देखो इसमें अभी ना इसका the next is headquarter of WHO. आप बताओ. First, please tell me. Paris, Geneva, New York, The Hague. What is the right answer? In which country? Yes, Del Singh, Safi, Mariam, Priyanshi, all right. Geneva in Switzerland, है ना? So B is the right answer to this question. Great. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे दिखा देता है. So here is India. This is Europe. Yes. तो ये जो है ये स्विट्जरलैंड है. और स्विट्जरलैंड के वेस्ट में जो है here you will find Geneva. Yes, Del Singh, Donut, Priyanshi, Safi. आप लोग से हाँ, पेरिस का यूनेस्को, न्यूयॉर्क यूएन, हेग आईसीजे. ग्रेट. Del Singh, Donut. Very good. Okay, who is the Director General of WHO? और ये आसान है, hopefully. You all should be answering it. And we have discussed earlier also. So I believe you should be knowing. W is of WTO. B. Great. Yes, Del Singh, Donut, Mariam, Safi, you all are right. Priyanshi. The right answer is Tedros, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and option B, she is actually Director General of WTO. Ngozi Okonjo-Iweala, and here is Tedros, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and he is from which country? The option C, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus belongs to which country? The answer is, मैंने बताया है, इथियोपिया. कभी कभी से पूछते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैंने देखा था एक बार एग्जाम में, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है ना, पूछा क्या था कि ही बिलोंग्स टू विच कंट्री. ये भी पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. आई हैव सीन. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग द कंट्री एंड ऑल. यस, मरियम, दल सिंह, प्रियांशी, ऑल द राइट. इथियोपिया के वो, ठीक है. अच्छा, यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, बता सकते हो? आई वाज सीइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, में एग्जाम का देखता रहता हूँ, उसे हमको नजर पड़ी थी ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं. यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है करेंटली जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? एनीवन? नहीं, नॉट कोरिया. इससे पहले वाले जो थे ना वो साउथ कोरिया के थे. बांग की मून वाज बिफोर हिम, बट करेंटली इज एंटोनियो गुटेरेस है ना यूएन सेक्रेटरी जनरल. ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? Portugal. Yes, Mariam and Safi both are right. Portugal. Yes, Priyanshi. Yes, Del Singh. And Geneva, Switzerland. And Director General is Tedros Adhanom Ghebreyesus. ठीक है. And parent organization is UN ECOSOC Council. Yes. Okay, here's the next question. Yes, Vidhan Pandey, nothing to worry much. इतना परेशान नहीं होने का. HMPV is not that much deadly. ठीक है. In fact, the government has also issued notification, or government has also clarified it is not a new virus. ठीक है. तो अब बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुआ. Otherwise, of course, it will impact your motivation. Nothing to worry, है ना. Last year, which of the following vaccine was last year in the news because of some cases of TTS? क्या है TTS? Is what it happens. Yes, Del Singh Donut is right. B is the right answer. Covishield में TTS निकला था. Blood clotting type. Yes, Priyanshi, Del Singh, you both are right. हाँ. कोवैक्सीन में नहीं निकला था. कोवैक्सीन is made by भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड. भारत बायोटेक प्लस ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ठीक है. और कोविशील्ड
किसका था, किसने बनाया था? हाँ, एस्ट्राजेनेका, इट्स अ यूके बेस्ड फर्म प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये वाला जो ऊपर वाला है, दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जाम क्लैट 2021 में। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। एक लास्ट वाला है, देखो ये वाला ही मैं बताता हूँ, सर्वीवैक, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था, ये पता होना चाहिए, डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, है ना। So ये पता होना चाहिए, दिस यू शुड बी नोइंग, स्पेसिफिकली फॉर सर्वाइकल कैंसर। और जो कोविशील्ड है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर बनाया गया है, बट इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वाज मैन्युफैक्चरिंग इट, बट कोविशील्ड इज नॉट मेड इन इंडिया। ये वाला मेड इन इंडिया, कोवैक्सीन इज मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया। ठीक है, पता होना चाहिए। स्पुतनिक वी जो है रशिया के द्वारा बनाया गया था, कोविड के लिए वैक्सीन है ना, गामालेया इंस्टीट्यूट करके उसने बनाया था रशिया का। ठीक है, so you should know TTS is a rare condition caused by AstraZeneca's Covishield and all, ये काफी न्यूज में था और उनमें केसेस हो गया था इंग्लैंड में, there have been lot of cases in this, है ना। थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये याद रखिएगा, बिकॉज हो सकता है इस साल जो आप एग्जाम दोगे इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, सो कोविशील्ड है ना, according to the court documents, Covishield developed by AstraZeneca and Oxford University, manufactured by Serum Institute in India, है ना, can lead to this instance and all। ठीक है, in which blood clotting form in unusual places in the body, or number of platelets in the blood drops, हो सकता है प्लेटलेट सडनली ड्रॉप हो जाए या ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, समथिंग लाइक दैट, है ना। ओके, तो इस सब में टीयर 1 में ये होता है, टीयर 2 में ये होता है, जैसे टीयर 1 में रेयर ब्लड क्लॉट्स है एटसेट्रा, इतना डिटेल नहीं जाना है। ठीक है, तो बट इतना पता होना चाहिए कि इट कैन हैव ब्लड क्लॉटिंग इम्पैक्ट। हाँ, इसमें कुछ सिम्टम्स भी है, जैसे पेन होगा, स्टोमक पेन, हेडेक, सर में दर्द होगा, स्टोमक पेन, स्वेलिंग इन द लेग्स, ट्रबल, सांस लेने में तकलीफ होगी, दैट इज व्हाट यू शुड नो। The next is who is considered as the founder of vaccine, because vaccine is in the news also, like vaccine, health, ये सब न्यूज में रहता है, and that is why I'm covering here. Alexander Fleming, Edward Jenner, Marie Curie, Louis Pasteur. Yes, Delphine Donut, Frenchy, Coel, Mariam, you all right, Edward Jenner. And Alexander Fleming is famous for coming up with penicillin. ये पूछा था किसी एग्जाम में कि penicillin has been discovered by whom. ठीक है, तो penicillin पूछते हैं, मैंने एग्जाम में देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू कम अप विद अ वैक्सीन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर, है ना। और लुई पास्चर इज फेमस फॉर द टेक्निक कॉल्ड एज पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेशन फ्रॉम द मिल्क, है ना। Marie Curie got 2 Nobel Prizes, one in chemistry and one in physics. Very good, that's Donut. Great. Now, first disease whose vaccine was made, and this vaccine was used to eliminate that disease also: AIDS, smallpox, polio, typhoid. What is the right answer? Yes, Priyanshi, Dal Singh, you both are right. First woman to win Nobel Prize. Eliminated in 1980. Yes, Dal Singh Donut. Smallpox, तो ये जो एडवर्ड जेनर ने बनाया था ना, वो द फर्स्ट, ये स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया था एडवर्ड जेनर, जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फादर ऑफ वैक्सीनेशन जिनको कहते हैं। दिस यू शुड बी नोइंग। ठीक है, यस। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। एक है इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देयर आर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, इसमें वैक्सीन वगैरह दिया जाता है ना, प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीनेशन। ठीक है, जैसे ये सारे 12 डिजीज, जैसे उसमें पोलियो फेमस है ना, और भी देख लेना, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा। सिमिलरली मिशन इंद्रधनुष एक इनिशिएटिव है, इसमें आई थिंक वैक्सीनेशन दिया था 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को। ठीक है, सो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, प्लीज रीड इट। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू प्लीज रीड इट, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन, जैसे अभी रिसेंटली स्लैट का पेपर हुआ था ना, तो उसमें क्वेश्चन आया था पीएम जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत पर। ठीक है, कि इसमें क्या है कि है ना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है और उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट
सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर किया जाएगा ₹5 लाख पर एनम, यानी पर ईयर पर फैमिली, एक फैमिली, है ना. सो ऑलमोस्ट, है ना, 50 करोड़ पॉपुलेशन विल बी कवर्ड, है ना. और ये इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? सो विद द हेल्प ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की मदद से the people will be identified कि which are the 50 करोड़ deserving beneficiaries. ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. जैसे टोटल 140 करोड़ के आसपास आबादी है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा ना, 120-130 करोड़ आबादी. सो विद द हेल्प ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है. ओके. how to make newspaper notes? Yes, Mariam will be having session on this, है ना. Nothing to worry. Most likely next week. So this is all about today's class. Thank you everyone. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thanks for watching. Have a nice day.